Okay, so last time we saw all those things, concepts, so Mhm. I think you understood all of them, right? Yes, yes. Okay, so I'll just start with the next thing. Okay, about the database, what are the different types of databases? We'll just have a look at it. I'll be sharing this document with you. Okay. See, as far as database is concerned, you've been working with relational database, right? Yes, So I asked you normalization, so I think you don't have much idea about normalization at the moment, right? yes. So we'll be seeing that also. First, I just want to cover the basics. Like I'll teach you this normalization and all that. So relational database, you have a fair idea that you have tables, you have primary key, foreign key. Do you know what is the primary Yes, key? What is primary yes. key and what is the foreign key? Primary key is a unique key which through which we can identify, and a foreign key which acts as a like it is a join between one and two table. In one table it is a primary, and the other one is a foreign key, and through that we make a join, or like we can link between them. Hmm. It is Develop a link. possible to link the table, you know, Yeah. with the primary table. Yeah. It's like a child table. Foreign key is always a child table. Do you know what are the different types of relationship you have, like one to one to many, Yes. many to many, right? Yes. Yes. So do you know how to implement many to many relationship? How do we implement one to many relationship? Come on, let me ask you that. So primary key in a one table and have a child key in more than one table. Primary in Uh, so the primary key will be in the main table, and having a foreign key in two different tables. So it is one to many. child table. If there's a Yes. parent-child relationship, then child Hmm. table always have a foreign key, which will link to Yes. the parent. But how do you implement many to many? Do you have any idea how to implement that many to many relationship? Yeah, like one table, if it is linking to another and another is linking to third, Hmm. in that way we can build a many-to-many relationship. No, no, it's not like that. So if primary key in first table, and having that as a foreign key in second table, and second table primary key is acting as a foreign key in third table. No, no, not like that. That is not the case. Actually, I have learned this, but now I have forgot. Yeah, so you have to understand that properly. I'll tell you Yes. how it is. Just a second. Okay, can you hear me? Yes. We'll have to study all that thing, my dear. So Okay. then non-relational databases, as I told you, no SQL database. So last time we studied different types of databases, right? Different Yes. types of data. What are the different types of data actually? Structural, semi-structural, and unstructured. Structured, semi-structured, and unstructured, right? So we Yes. have all those type. Correct? Yes. Right. So
Now, so semi-structured database, you can say there are they all come under NoSQL database, non-relational database. See, in market we have relational database and we have non-relational database. Hmm. So non-relational databases are database management systems that don't apply a relational schema to the data. Means there's not fixed data schema like we saw key value pairs, JSONs. So these are non-relational. Okay. Yes. So there's no fixed schema in that. So there are four common types of non-relational database in use that we have to see. Okay. Yes. So this is like fundamentals I'm teaching you. Yes. So first one is key value databases in which each record consists of a unique key and a associated value, which can be in any format. See like this, there's a key and there's a value. So this key value databases. Okay. Okay. So Yes, sir. then we have document databases, which is your uh, JSON, which you are aware of. You know it this Yes. very well, right? Yes. Those are called as document database. Third thing is column family database. So which stores tabular data comprising rows and columns, but you can divide the columns into groups known as column families. So like this. So you can see here there's a column family. Name Yes. and address is coming under customer, name and price is coming under product like this. So this we also have column family database. So each column family holds a set of columns that are logically related to each other. Column families help you in big data analysis. So this is another type of data. So normally in relational database, you don't see this, right? Yes. So here we see all these things. Okay. Okay. Yes, sir. Just a second. Then we have graph database. So graph database also we discussed last time, right? So it looks like this. So sometimes it is easier to represent data like this in a graph form. So that also, so we store the relationships between the nodes, how one node is related to other one. So that is called as graph database. So these are the different types of databases we have, right? Yes. So they all come under NoSQL database, under the category of non-relational databases, or you can say NoSQL database. All right. Yes. And what Have you are the example of graph database? graph database example as in what? Like where we can create this graphs. Something called Gremlin करके है उसमें create कर सकते हैं Gremlin database. We'll come to that. Okay. Okay. So there we can actually store these nodes and vertices and links, edges. Mhm. So we can store like this. So graphs, many situations can be represented using graphs only. Mhm. For example, like newspaper agency, Mhm. so they may use a graph for that. Okay. Okay. Yes. Because that newspaper agency, they are catering to many societies and where they are delivering the newspaper like that, Yes. that way. Just a second, I'm just explaining Okay. something to my boy. So this is clear, this part is clear, right? So I'll Yes. open another Yes. document now. Yes. Just give me a moment.
Yeah, I'll open another document also now. Okay. So have you worked on Azure? No, not yet. Do you have Azure account to practice and all? No. Your company may be having Azure account, no? Yes, but still, like my onboarding is not done in the new project. They have just given a training material. You ask them for Azure account also, no, for practice if possible. Otherwise, you have a credit card with you. No. हेलो, no credit card free account मिलता है उसमें, इसलिए पूछ रहा हूँ. एक Uh, 1 month like free account you किसी get. फ्रेंड का यूज कर पाऊंगा. हाँ चलेगा, तो वो एक है, बट अगर कंपनी से आपको देते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना. अदरवाइज देन एक फ्री अकाउंट बना के करना पड़ेगा. एक मिनट. तो अभी Azure storage, so you have to know about the storage, like what are the different types of storages and all that we have to study in Azure. So normally what happens is storage means you think that it is only something which is attached to your computer, that is what is disk attached storage. All right, but storage thing has changed over the years. अभी खाली what happens in cloud, you take compute separately and storage you will take separately. दोनों आप अलग अलग लोगे क्लाउड में. कंप्यूट अलग से लेते हैं, स्टोरेज अलग से लेते हैं हमेशा क्लाउड में. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. कंप्यूट मीन कंप्यूट मीन्स जैसे कंप्यूटर लिया आपने तो कंप्यूट अलग से और स्टोरेज अलग से. कोई सर्वर, सपोज यू वांट टू मेक सम सर्वर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए कंप्यूट अलग से लेंगे. मतलब एक बेसिक कंप्यूटर लेंगे, उसमें बेसिक स्टोरेज रहेगा या नहीं रहेगा. बट इफ यू नीड एनीथिंग other than that, then you will take the storage separately. It's external to the system. The storage is external to the system. Getting my point? यस. तो स्टोरेज का कंसेप्ट चेंज हो रहा है. नॉर्मली आप लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप के साथ आपको इंटरनल हार्ड डिस्क भी मिल रही, राइट? हाँ. वो मिल रही है आपको, राइट? यस. सो दैट इज योर इंटरनल स्टोरेज, और यू कैन से डिस्क अटैच स्टोरेज. बट अभी जब सर्वर्स बनाएंगे तो हम बाहर से लेंगे उसका जो भी है. विल टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. हम बाहर से ले लेंगे उसको, स्टोरेज को. Like online from cloud. It's an external entity. Depending on what type of data you want to store, you have to take the storage. आपका structured है, semi-structured, unstructured. Depending on that, you have to take the storage. So let's talk about that. So this document briefly talks about the storage which is there in the cloud. So first type is the blob storage. Okay. So blob storage आपका सबसे पहला storage है, blob storage. तो Okay. so blob storage जो है आपका, स्ट्रीमिंग डेटा स्टोर करना है, सपोजिंग आपको कुछ करना है तो ब्लॉब स्टोरेज कैन बी यूज्ड. Okay. ब्लॉब स्टैंड फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स. Okay. सो वी कैन हैव इसमें क्या कंटेनर्स और सब कंटेनर्स बना सकते हैं. एंड देयर आर 3 types of blobs: block blob, page blobs and append blobs. Is it? There are 3 types of blobs. One is known as block blobs, second is page blobs, and third is append blobs. Is it? There are 3 types of blobs. Okay. So
एक मिनट ना। हाँ हाँ, till then मैं रीड कर लेता हूँ। तो इसमें आप देखो कि हमारा एक ब्लॉक ब्लॉब से है, पेज ब्लॉब से, अपेंड ब्लॉब से। सो ब्लॉक ब्लॉब्स जो है दैट इज यूज, आपको पाइथन आता है ना, थोड़ा आता है ना, पाइथन सीखा है ना आपने? हेलो। लाइक थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आ जाएगा। अभी राइट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूंगा देख के। क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए पाइथन का नॉलेज भी चाहिए ना, थोड़ा बहुत चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो आई कैन गो थ्रू द वीडियो। आई एम जस्ट आस्किंग, आता है क्या आपको पाइथन की? नहीं, आपका आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या बोला था आपने? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा अच्छा, राइट, ठीक है। आ, तो block blob is handled as a set of blocks. Each block can carry up to 100। ये स्ट्रीमिंग डेटा जो रहता है ना, जैसे वीडियोस हो गया, हम्म। तो अगर वो हमको स्टोर करना है तो ब्लॉक ब्लॉब यूज करना है। ओके So block blob is used for that, for storing the streaming data। स्ट्रीमिंग डेटा स्टोर करने के लिए ब्लॉक ब्लॉब्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। ठीक है ना? और तो यहाँ पे लिखा है कि कैन मैक्सिमम साइज इज 4.7 TB। 4.7 TB में इतना डेटा तो नहीं आएगा अगर हम कुछ स्ट्रीम करते हैं जैसे अभी आज की डेट पे। a blob can contain 50,000 blocks giving a maximum size of 4.7 TB। हम्म। ठीक है, फिर और एक 4.7 TB इज गुड इनफ ना, आप उसमें और भी स्टोर कर सकते हैं ना। वन ब्लॉब कैन बी दैट मच साइज। ओके, एक तो वो सिंगल फिर ब्लॉब लेंगे दूसरे तो, ब्लॉग में जाएगा बाकी का हाँ, डेटा। दूसरे ब्लॉब में जाएगा, ठीक है ना? हम्म। देन यू हैव पेज ब्लॉब। ओके, सो पेज ब्लॉब में क्या होगा कि वो अपना रैंडम एक्सेस, जैसे अपना हार्ड डिस्क है ना, हम्म। तो वो पेज ब्लॉब ही समझो, हम कभी भी डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वट एवर वी वांट टू डू वी कैन डू विद द पेज ब्लॉब। तो पेज ब्लॉब अलाउज यू रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा। वो पेज ब्लॉब हो गया।
So a page blob is organized as a collection of fixed size 512 byte page. A page blob is optimized to support random read and write operations. You can fetch and store data for a single page if necessary. A page blob can hold up to 8 TB of data, right? Mm-hmm. Azure uses page blobs to implement virtual disk storage for virtual machine. अपनी जो virtual machines में जो storage होगा वो page blobs ही होंगे, right? अगर आपको कोई दूसरा हार्ड डिस्क चाहिए उसमें डेटा स्टोर करने की रैंडम एक्सेस जो आपका लैपटॉप में जो जैसा हार्ड डिस्क रहता है आप उसमें हर एक टाइप का डेटा स्टोर करते हो ना, तो पेज ब्लॉब हो गया वो, राइट? जैसा भी आपको डेटा चाहिए हम स्टोर कर रहे हैं उसमें, तो पेज ब्लॉब, दैट इज पेज ब्लॉब, राइट? देन वी हैव, तो कहने का मतलब है कि अभी क्लाउड में ये हो गया कि आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है उस हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा ब्लॉब्स. सो ब्लॉब्स यू हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू द डेटा. जैसा आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको स्टोरेज लेना पड़ेगा. फिर कॉस्टिंग भी उस हिसाब से होगी. यू वांट टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, राइट? तो जितना आपको जरूरत है उतना लेंगे. सो दैट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट? सो हमारा हो गया ब्लॉक ब्लॉब्स, पेज ब्लॉब्स, अपेंड ब्लॉब्स. अपेंड ब्लॉब्स कैसा होता है कि अपेंड मतलब एडिंग एट द एंड. जैसे कि आपका कोई लॉग फाइल्स है, लॉग फाइल्स होती है ना, लॉग फाइल्स आपकी होगी. लॉग फाइल्स पता है ना आपको कैसी रहती है, राइट? कौन सी फाइल? लॉग लॉग सर्वर के लॉग्स फाइल्स होती है ना, हाँ सर्वर हाँ लॉग हाँ फाइल्स. हाँ हाँ. तो ये सब आपकी पेज ब्लॉब्स हुए. सॉरी, अपेंड ब्लॉब्स. उस लॉग फाइल्स कैसा रहता है, वी ऑलवेज ऐड द डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल, राइट? Yes. एंड में ऐड होता जाता है ना डेटा. Yes. सो दोज आर सुटेबल फॉर अपेंड ब्लॉब्स. या नेटवर्क लॉग्स रहेंगे, नेटवर्क लॉग्स भी आपके एंड ऑफ द फाइल अटैच होते जाएंगे, राइट? सो दोज आर, दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? क्लियर? Yes. So you can only add blocks to the end of the append block. Updating or deleting existing blocks isn't supported. Each block can vary in size up to 4 MB. Maximum size of an append block is just over 195 GB. तो 4 MB का ब्लॉक्स आप ये कर सकते हैं, राइट? Yes. So append blobs का can you give a real time example like इस पे? सिंपल एग्जांपल है, नेटवर्क्स, जो भी नेटवर्क्स रहता है ना, हाँ. नेटवर्क में append ब्लॉक, ये नेटवर्क की लॉग्स तो रहती है ना, कोई सर्वर लॉग्स रहेंगी ना, सर्वर लॉग्स रहते हैं ना, सर्वर के लॉग्स आपने कभी देखे क्या? नहीं देखे? कोई भी एप्लीकेशन के लॉग्स देखे? अभी आप एप्लीकेशन हाँ यूज कर रहे इन्फॉर्मेटिका के देखे. हैं. हाँ इन्फॉर्मेटिका के देखे लॉग्स. हाँ, तो लॉग कैसे होते हैं? लॉग्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन में एरर आ गया, कुछ आ गया, तो आप क्या करते हो उसको? तो लॉग्स चेक करते हैं लाइक क्यों फेल हुआ है लॉग. हाँ, तो लॉग्स में क्या रहता है, उसमें ये रहता है ना कि वो हमेशा एंड में ही ऐड होता है ना लॉग्स. लॉग्स ऑलवेज आर इन द एंड, राइट? तो हमेशा वो एंड में ही रहता है. एंड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एंड में ही करते हैं ना वो, यस. ठीक है ना? तो जो भी इंफॉर्मेशन ऐड होनी है, जो नया लॉग जनरेट होगा वो एंड में जनरेट होगा, राइट? एंड में ऐड होता ही जाएगा वो. यस. समझ में है? सो दैट इज अपेंड ब्लॉब्स. अपेंड ब्लॉब्स इज बेसिकली दैट, जो एंड में ऐड होता रहता है उसको.
उसको अपेंड ब्लॉक्स बोलते हैं, समझे? यस। So blob storage provides 3 access tiers which help to balance access latency and storage cost. ये समझा ना? अब ये 3 ब्लॉक्स समझ में आ गए ना? हाँ हाँ हाँ। So blob storage provides 3 access tiers. अभी इसमें जब हम blob storage लेते हैं तो हम access tier specify कर सकते हैं कि हमको किस तरह का चाहिए, जैसे कि hot tier, cool tier, archive tier. So hot tier मतलब जो frequently accessible data है उसको, उसके लिए हम hot tier लेंगे। जो भी frequently accessible data है उसको hot tier लेंगे। तो वो frequently accessible है। Then cool tier has lower performance. तो कूल टियर जब मतलब कोई ज्यादा एक्सेस नहीं करना है, जल्दी से हमको एक्सेस नहीं, कभी कभी लगने वाला डेटा, वो क्यों कूल टियर में रहेगा। Yes. तो उससे फायदा ये कि उसका चार्जेस कम लगेगा हमको। हॉट टियर में जो डेटा है उसका चार्जेस ज्यादा लगता है, कूल टियर का चार्जेस कम लगेगा थोड़ा सा। ये उसका फायदा है, ठीक है ना? तो so we can start with hot tier and then we can convert to cool tier and vice versa. Okay? तो हम स्विच कर सकते हैं, एक यहाँ से वहां लिया, वहां से यहाँ लिया, तो जैसा हमको चाहिए वैसा कर सकते हैं। एक आर्काइव टेयर भी होता है। अगर कोई डेटा हमको अभी बहुत दिनों तक लगने वाला नहीं है तो हम आर्काइव करके रख सकते हैं उसको। सो इट विल बी लेस प्राइस, लीस्ट प्राइस उसका ही रहेगा, आर्काइव टेयर का सबसे कम प्राइस होगा, ठीक है ना? Yes. सो आर्काइव टियर विल बी द लीस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस आर्काइव टियर का रहेगा। So archive tier provides the lowest storage cost but with increased latency. Latency ज्यादा रहेगी उसकी, मतलब उसको अगर आपको वो डेटा चाहिए रहेगा तो आपको few hours के लिए भी वेट करना पड़े। Okay. Yes. मैंने read किया ये last वाला हाँ पूरा। Yes, I क्या read that archive tier read किया पूरा। रीड किया हाँ क्या? आपने yes I got that। हम्म तो यार ठीक है, आपने रीड किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो बोलना है तो बोलने तो दो भाई नहीं साहब। ओके ओके सॉरी सॉरी। सो हॉट और कूल टीयर्स फ्यू मिली सेकेंड्स में आएगा, इसको टाइम लगेगा, राइट? हाँ हाँ। रिहाइड्रेशन करना पड़ता है इसको, तो रिहाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए वक्त लगता है, बट इट्स ओके। तो क्लाउड में यही है कि आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज का पैसा लगता है। सारी फैसिलिटीज है लेकिन आपको कौन सी चीज कब लेना है, क्या लेना है, आपको ये समझने आना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन क्लाउड, ठीक है ना? तो ये आप पक्का समझिए। एक मिनट, आप आपका लैपटॉप, सॉरी सर आपका आवाज ब्रेक हो गया। नहीं एक मिनट एक मिनट, हम्म, ठीक है? दूसरे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ना। हाँ हाँ ओके नाउ, और इसमें लाइफ साइकिल भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि थोड़ी दिन बाद कोई चीज यू नो कोल्ड टियर में आर्काइव हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं।
Okay. तो हॉट से कूल चला जाएगा, कूल से आर्काइव चला जाएगा, Mhm. ठीक है ना। और डिलीट भी कर सकते हैं। एक्चुअली डेटा की एक लाइफ साइकिल होती है कि इंजेस्ट कब होता है, फिर कितने देर तक वो प्रोडक्शन में रहेगा, कितने दिन देर बाद फिर वो तो कहीं दूसरे इसमें जाएगा, Mhm. या तीसरे इसमें जाएगा, ये या फिर आर्काइव में जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा। तो आप लाइफ डेटा की लाइफ साइकिल डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये आप ऑटोमेट कर पाए तो अच्छा है ना, क्योंकि नहीं तो आपको ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमेशा। Mhm. Mhm. यू हैव टू मैनेज इट ऑलवेज। ओके, तो ये चीज होता है इसमें, Mhm. ठीक है ना। Yes. And these tire applies on all the blocks. सॉरी, हाँ जो ब्लॉब्स ऊपर, पे, ब्लॉब्स हाँ. पे, यस यस, इट अप्लाइज ऑन ऑल द ब्लॉब्स, दैट्स राइट। देन एक्सप्लोर एज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2। तो ये अलग टाइप का स्टोरेज है। एज्योर डेटा लेक is a separate service for hierarchical data storage for analytical data lakes, often used by so-called big data analytical solutions that work with structured, semi-structured, and structured data stored in files. आपने देखा कि डेटा, कुछ डेटा फाइल्स में स्टोर होता है, कुछ डेटा डेटाबेसेस में स्टोर होता है, राइट। हाँ. हाँ, तो ये एक टाइप का स्टोरेज है। तो ये एक टाइप का स्टोरेज है, आप समझ लो, Mhm. जो जो इस तरह का डेटा स्टोर कर सकता है, जो बिग डेटा एनालिसिस के लिए काम में आएगा। लास्ट टाइम हमने बिग डेटा सीखा था ना। बिग डेटा, व्हाट इज बिग डेटा, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज बिग डेटा? Yes, like a set nodes of data assembled in a one single storage. Uh, नहीं, बिग डेटा किसको बोलेंगे? बिग डेटा बोलेंगे किसको, मैं ये पूछ रहा था आपको। Hadoop. नो यार, मैंने लास्ट टाइम बताया, आपने स्निप लिया हाँ गया। हाँ. Yes, big data, I know, like variety of data assembled in a one single table or at a one single place, and नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मैंने कल लास्ट टाइम remote बोला tech, था। so it cannot be managed by a single system. Big हम्म, data, yeah. efficiently one system cannot handle it, you need a Mm-hmm. cluster of nodes। Okay. Okay, so that is big data। Okay, Yes. और what are the three V's of big data? Three V. Variety, velocity, and volume. Yeah, volume, velocity and volume, volume, Variety. velocity and variety। Yes. correct।
So Azure Data Lake Storage 2 is a newer version of the service that is integrated in Azure Storage, enabling you to take advantage of scalability of blob storage and the cost control of storage tiers, combined with the hierarchical file system capabilities and compatible with major analytics systems like Azure Data Lake Store. तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए ये वाला स्टोरेज काम में आता है. इसमें डेटा हायरार्किकल वे में स्टोर कर सकते हैं, फाइल स्टोर कर सकते हैं, हर टाइप की फाइल्स, अलग अलग टाइप की फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं, राइट. हायरार्किकल मतलब नॉर्मल अपना जैसे हायरार्की रहती है वैसे ही है. ओके, सिस्टम्स लाइक Hadoop in Azure HD Insight, Azure Databricks and Azure Synapse can mount a distributed file system hosted in and use it to store huge volumes of data. तो अपने को स्टोरेज देता है जो बिग डेटा एनालिसिस के लिए काम में आएगा. तो इट गिव्स यू अ फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम माउंट करना मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम माउंट? माउंटिंग अ फाइल सिस्टम कभी किया आपने माउंट फाइल सिस्टम को? नहीं. अगर आप कोई स्टोरेज लेते हैं ना, उसको जैसे फाइल स्टोरेज लिया आपने या ये वाला स्टोरेज लिया, तो हम उसको माउंट करेंगे ना अपने सिस्टम पे, तो अपने को एक ड्राइव लेटर दिखेगा. जैसे कि आपके लैपटॉप में CDE ड्राइव है ना, हाँ हाँ हाँ. तो वैसे आप अगर ये स्टोरेज को माउंट करेंगे तो Z ड्राइव दिखेगा फॉर एग्जांपल. समझा ना? दैट Z ड्राइव इज नथिंग बट दिस स्टोरेज. फिर उसमें जो भी आप स्टोर करोगे वो उसमें जाता है, क्लाउड में जाएगा. ओके. तो ये जो स्टोरेज है, इट इज हेल्पफुल फॉर एनालिटिक्स and these systems like Azure HD Insight, Azure Databricks, Azure Synapse Analytics, ये सब services use करते हैं उसको, using all of these. Getting? तो इस तरह से चलता है वो. Right? Yes. So to create an Azure Data Lake Store Gen 2 file system, you must enable hierarchical namespace option of an Azure storage account. उसमें एक option रहता है, उसको enable करना पड़ता है. You can do this when initially creating a storage account, or you can upgrade an existing Azure storage to support Data Lake Gen 2. Be aware that upgrading is a one-way process. After upgrading a storage account to support a hierarchy namespace, you cannot revert it back. ठीक है, तो हम ये इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो इसलिए हमको Azure अकाउंट चाहिए. एक बार आप जरा पूछो. मैं पूछता हूँ, अगर लाइक हम खुद से क्रेडिट कार्ड से करें, इज दैट ओके? हाँ कर सकते हैं ना, वो तो कर ही सकते हैं. एक मैं एक मिनट, बार किसका पूछता फोन हूँ आ रहा है? बिकॉज एक मिनट, वो फोन आ नहीं रहा है. देंगे. हाँ हाँ. एक ओके मिनट. सर. हेलो. हाँ, एक्चुअली सॉरी, गलती से लगा था नंबर. ठीक है, ये समझा अभी आपको? यस.
तो देखो एक बार, नहीं हुआ तो फिर क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा। कोई फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड ले लो आप, पैसा नहीं लगेगा उनको कुछ भी, इतना ध्यान में रखो। महीने भर हम यूज कर सकते हैं उसको। हेलो। Yes. Okay, sir. देन नेक्स्ट इज एजोर फाइल्स। एजोर फाइल्स आपका, जैसा अभी मैंने कहा था, आप आपके ऑफिस में नेटवर्क शेयर एक्सेस करते हैं क्या कभी? शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करते हैं कोई दूसरा सर्वर का या हाँ कोई? हाँ 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 करते हैं ना? हाँ। तो नॉर्मली वो जो डेटा होता है आपके ऑफिस में रहता है, दूसरे कोई सर्वर पे रहता है, राइट? वहां से आप स्लैश स्लैश Yes. करके आप एक्सेस करते हो, राइट? Yes. एम आई राइट? Yes. हम्म। तो इसमें भी एजर में भी हम फाइल शेयर उस तरह का बना सकते हैं जो अपने को लगेगा वो होता है क्लाउड पे, बट यू विल फील एज इफ यू आर एक्सेसिंग द शेयर फ्रॉम योर लोकल नेटवर्क। आपके लोकल नेटवर्क से आप वो शेयर एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। समझे ना आप? Okay. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोर, दैट इज एजर फाइल्स। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। अगर आपको जो डेटा सेव करना है, यू वांट टू विंडोज शेयर बोल सकते हैं इसको, विंडोज शेयर या लिनक्स का शेयर होता है, वो एनएफएस प्रोटोकॉल यूज होता है। ये सारी चीज आप रिवाइज करते रहो। हाँ विशाल, अभी मैं Yes. काफी सारी चीज आपको देने वाला हूँ, तो आपका काम है कि रिवाइज करना है। Yes. सर ये जो डॉक्यूमेंट आप शो कर रहे हो ये अभी शेयर करोगे ना? हाँ अभी ये वाला शेयर कर दूंगा मैं। ओके। मैं सो हम्म। नहीं, सो मैं इनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के रखूंगा फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस एंड इजी टू हाँ हाँ बनाना। लर्न। So a file share enables you to store a file on one computer and grant access to that file to users and applications running on another computers. Yes. Right. So this strategy can work well for computers in the same local network, but doesn't scale well as the number of users increases or if the users are located at different sites. सो एज्योर हमको एक जरिया देता है जिससे कि ये जो नेटवर्क शेयर जो हम नॉर्मली ऑफिस में ऑन प्रीमाइसेस में करते थे, अभी हम उसको एज्योर में रखेंगे, बट इट विल स्टिल यू विल फील दैट कि वो शेयर आपके लोकल ऑफिस में ही है, ऐसे लगेगा आपको। ठीक Yes. है ना? तो जेड ड्राइव वगैरह आ जाएगा, शेयर्ड फोल्डर या जो भी। सो दैट इज कॉल्ड एज एज्योर फाइल शेयर। इसमें क्या हुआ कि विद दिस even your some of the applications which Mm. were actually working locally, we can shift to cloud, क्योंकि वो applications they require this network share and those network shares are available only local, right, in your office network, but अभी वो Yes. share cloud पे है। तो लेकिन वो एप्लीकेशन को लगता है अभी अभी भी हम ऑफिस में बैठे हैं, राइट? Yes. सो ऐसा उनको लगता है, राइट? Yes. लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये है तो क्लाउड में ही है वो, लेकिन आप घर बैठे भी वो एप्लीकेशन फिर यूज कर पाएंगे। Yes. सो यू विल बी एबल टू यूज दैट एप्लीकेशन इवन इफ बाय सिटिंग एट होम। ये आपको फायदा है उसमें। Mm. समझे ना? Yes. तो लाइक एज वी हैव अ गूगल ड्राइव, हम कुछ भी स्टोर करते हैं देन वो हम लिंक शेयर करते हैं एंड एक्सेस देते हैं थर्ड पर्सन को, लाइक जिसको भी हमें हम्म। देना है। सेम वर्क्स विद द एज्योर, लाइक इफ एप्लीकेशन कोई डेटा स्टोर्ड है या कुछ अपडेटेड उसमें कोड लिखा हुआ है, सो व्हेन वी शेयर विद अनदर एज्योर यूजर, अकाउंट यूजर, सो ही कैन एक्सेस एंड मैनेज, राइट? दिस इज द हम्म। मीनिंग। ओके। या दैट इज ट्रू। बट इसमें यही है कि वो गूगल ड्राइव है, बट गूगल ड्राइव को एक्सेस करना पड़ता है ना पोर्टल पे जाके। बट हाँ ये आपको एज अ नेटवर्क ड्राइव दिखेगा आपको। आप आपके विंडोज में स्लैश स्लैश करके आप उसको एक्सेस करोगे, जैसे आप आपके ऑफिस का नेटवर्क शेयर एक्सेस करते हो ना, हाँ। वैसे आप करोगे एग्जैक्टली। ओके।
उसमें कोई फर्क नहीं होगा, इट विल बी सेम। समझे ना आप? यस। तो इस तरह से होगा वो। So you can create Azure file storage in storage account. Azure file enables you to share up to 100 TB of data in a single storage account. This data can be distributed across any number of file shares in the account. So 100 TB of data एक storage account में, actually storage account बनाना पड़ता है Azure में. Storage account क्यों बनाते हैं? क्योंकि then we can set some common properties. स्टोरेज अकाउंट बनाने का कारण ये कि हम फिर कॉमन प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं उसका। कॉमन प्रॉपर्टी एज इन उसका रीजन सेट कर सकते हैं कि कौन से रीजन में है, या कौन से उसका फिर रेप्लिकेशन कैसे होगा, एक कॉपी बनेगी, दो कॉपी बनेगी, कितने कॉपीज बनेंगी, वो भी उसमें समझ में आएगा। राइट? तो ये उसका फायदा है। ठीक है ना? यस। तो कुछ कुछ स्टोरेजेस उन्होंने स्टोरेज अकाउंट में दे दिया कि आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है और सबके प्रॉपर्टीज हम एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ स्टोरेज अकाउंट। हाँ, सो प्रॉपर्टीज एक ओनर के पास होगा कंट्रोल करने के लिए, या जितनों को एक्सेस है सब कर सकते हैं? क्या चीज? जो प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, दैट ओनली वन यूजर कैन डू, और ऑल यूजर्स जो भी वो एक्सेस कर रहे The administrator will set the properties हैं? and the ओके। users will access it. हम्म। ठीक है ना? तो इस हम्म। तरह से होगा वो। एक मिनट। So the data can be distributed across any number of file shares in the account. Maximum size of file can be 1 TB, but you can set the quotas to limit the size of each share. Right. So currently Azure file storage supports, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है। Suppose 2000 concurrent corrections per shared files. अब सोचो ना, 2000 यूजर्स एक साथ वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए। So after you have created a storage account, you can upload files to Azure File Storage using Azure Portal or tools such as AZ Copy Utility. You can also use Azure File Sync service to synchronize locally cached copies of shared files with the data in Azure File Storage. Sync भी कर सकते हैं अगर आपके जो डेटा है आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली क्लाउड में जाए। So we can sync it into the cloud also. समझे ना? तो ऑटोमेटिकली वो
क्लाउड में जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। आज का क्लाउड पे सेव करने अच्छा है ना, इट्स बेटर टू सेव एवरीथिंग इन क्लाउड, Yes. easy for us Yes. to save in the cloud. Okay. Yes. तो इसका भी प्रैक्टिकल हम करेंगे, कैसे स्टोरेज बनाने का, ये फाइल स्टोरेज वगैरह, सब एक्सरसाइज, वी हैव ऑल दिस एक्सरसाइज, वो करना है हमको। Okay. So it can this file storage offers two performance tiers. Standard tier uses hard disk based, whereas hardware in the data center, whereas premium will use SSD. SSD पता है ना आपको? SSD? Solid state disk like वो क्या होता है? हाँ, I फास्ट don't. रहती, फास्ट हार्ड डिस्क रहती है। आजकल जो हार्ड डिस्क हम लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। Okay. तो दैट इज फास्टर हार्ड डिस्क। Okay. देन शेयरिंग के दो प्रोटोकॉल्स है। विंडोज के लिए आप शेयर बना सकते हैं या लिनक्स सिस्टम के लिए शेयर बना सकते हैं। विंडोज इज यूजिंग SMB protocol, server message block protocol for sharing files. These are commonly used protocols in Windows. Whereas your network file system NFS share are used by some Linux and Mac OS version. तो Linux वालों के लिए भी शेयर बना सकते हैं हम। तो we can make any share, either we can make the SMB share or you can use the NFS share. दोनों में से कोई भी बना सकते हैं हम। The next type of storage is Azure Table Storage for key value pair. नाम tables लिखा, but tables से don't really get misled by the tables, right? Word tables. Here it is key value pair storage only. Each item is represented by a row that contains columns for the data fields that need to be stored. So each item is represented by a row that contains columns for the data fields that needs to be stored. तो इसमें देखिए की वैल्यू पेयर, इसमें लेकिन थोड़ा सा अलग है। की आपकी टाइम स्टैम्प इज अ की वैल्यू, ये हो गया। प्रॉपर्टी 1 इज अ की वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 इज अ की वैल्यू। आपकी रो की भी होती है, जैसे आपका, so there is a key for every field, plus we also have a key for the whole row, and we also have a partition key, and many rows you can put in a particular partition. उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, स्ट्रक्चर समझो, इसका थोड़ा सा अलग है, राइट? सो पार्टीशनिंग करने से कैसा है, बिग डेटा एनालिसिस के लिए आसान पड़ता है ना, बिकॉज बिग डेटा मतलब एनालिसिस इज डन बाय क्लस्टर्स. So one node can work on one partition, second node will work on second partition, third will work on third partition, ऐसा चलेगा वो. Getting? Yes. तो ये पार्टीशन की भी होती है, तो आपने डेटा को पार्टीशन के हिसाब से भी डिवाइड कर दिया. रो हैज अ की एंड ईच फील्ड हैज अ की, ऐसे. So it doesn't have concept of foreign keys, relationship, stored procedure views, and data stored in usually denormalized, with each row holding the entire data for the logical entity. For example, table holding customer information might store first name, last name, one or more telephone numbers, and one or more addresses for each customer. The number of fields each row can be different depending on the number of telephones address each customer has. In relational database, this information would be spread across multiple rows in several tables. इसमें अनस्ट्रक्चर्ड है ना, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो इसमें आप कितने भी जैसे इसमें बोला है ना, कितने भी आप उसमें कॉलम्स आ जाएंगे. सो पार्टीशनिंग भी किया हुआ है इसमें, राइट? To help fast access, Azure Table splits a table into partition. Partitioning is a mechanism for grouping related rows. ये मैंने आपको बताया, based on common properties or partition. Yes. So it can also improve scalability and performance. Following partitions are independent of each other and can grow and shrink as rows are. When you search for data, you can include partition key in the search criteria. This helps to narrow down the volume of data to be examined. तो सर्चिंग के लिए भी यूजफुल हो जाएगा. हर एक पार्टीशन को आप स्केलेबल है, अलग से वो चलेगा. बिग डेटा के लिए भी मैंने कहा ना, वो भी यूजफुल होगा, बिकॉज वन नोड कैन वर्क ऑन वन पर्टिकुलर पार्टीशन, राइट? Yes.
So the partition key identifies the partition containing row or row key and a row key that is unique to each row in the same partition. Items in the same partition are stored in row key order. If an application adds a new row in the table, Azure ensures that the row is placed in the correct position in the table. This scheme enables application quickly perform point queries, identify single row and range queries that fetch a contiguous block of rows in a partition. Point query मतलब एक particular row पे हम काम कर रहे हैं और दूसरा होता है कि range query means range of things you are working with, right? Yeah. ठीक है, चलो मैं ये डेटा आपको भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो आज के लिए हाँ, इतना काफी है. आई वन अदर क्लास राइट नाउ, कल भी 3 बजे हम कनेक्ट कर लेंगे. ओके. ओके डियर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी ये आप टुडे. ईमेल पे शेयर करोगे ना? ओके. ईमेल पे करूँ या आपको सीधा व्हाट्सएप पे डालूं क्या? जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, चलो. ओके सर. ओके.